हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीसीए थर्ड सेमेस्टर के स्टैटिस्टिक्स पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। यह पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी में ईयर 2020 में आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्योंकि यह क्वेश्चन सेक्शन ए मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो हम इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे को फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिफाइन करना है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिफाइन करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी कर्व को डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से। ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. It is closely related to histogram. Frequency polygon is obtained by joining line segments of the midpoints of the top rectangles in a histogram. It can be drawn with or without histogram. अब हम frequency curve को define करेंगे. A frequency curve is just like a frequency polygon, but only difference is that the points are joined by a smooth freehand curve instead of line segments as we join in frequency polygon. The objective of smoothing of the frequency polygon is to eliminate all possible fluctuations present in data. अब हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमें असाइनेबल और रैंडम कॉसेस को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम रैंडम कॉसेस को डिफाइन करेंगे, फिर असाइनेबल कॉसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रैंडम कॉजेस से। रैंडम कॉजेस आर आल्सो नोन एज चांस, नेचुरल और अलाउएबल कॉजेस। दीज कॉजेस आर नेचुरल टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड। फॉर इंस्टेंसेस, वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, machine vibrations, voltage variation, etc. interact randomly to produce slight variation in the quality of the product. अब हम assignable causes को define करेंगे। Assignable causes are also known as non-random or preventable causes. These are the causes which creates ordinary variation in the production quality. In any production process, variation take place because of changes in raw material, new vendors, unskilled staff, wrong setting of the machine, etc. Variation due to these causes can be controlled before the defective items are produced. अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमें इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इक्वली लाइकली इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। द आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर। इन अदर वर्ड्स, इक्वली लाइकली मीन्स ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अकर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इक्वली लाइकली इवेंट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। Now we will define mutually exclusive events. In probability theory, two or more events are said to be mutually exclusive if they cannot occur at the same time. That is, simultaneous occurrence is not possible. Mutually exclusive events से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। In second question,
An average rainfall of a city from Monday to Saturday is 0.3 inches and average rainfall for the week is 0.5 inches. And question is, what was the rainfall on Sunday? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स परमुटेशन टॉपिक पर बेस हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन ए रो इफ द बॉयज एंड द गर्ल्स आर ईच टू सिट टुगेदर? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन ए रो इफ ओनली द बॉयज मस्ट सिट टुगेदर? इस पार्ट का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन में हमें कंट्रोल लिमिट्स, टॉलरेंस लिमिट्स और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि यह क्वेश्चन सेक्शन ए मींस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो हम इन लिमिट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल लिमिट से। इन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल लिमिट्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस और बाउंड्रीज that are plotted on a control chart to distinguish between normal and abnormal behavior of a process. In other words, these limits are the indicators of the variation in the performance of the process. The control limits are calculated from the data collected from the process and are used to determine whether the process is in statistical control or not. If data points are within the control limits, it indicates that the process is in control, or if there are data points outside of these control limits, it indicates that a process is out of control. अब हम टॉलरेंस लिमिट्स को एक्सप्लेन करेंगे। Variability is one of the fundamental concepts of modern quality control. It is practically impossible to manufacture one article exactly like another. Therefore, the range of permissible difference have been standardized under the working limits. These limits define the range within which a product or process can vary while still meeting the customer requirements and quality standards. In manufacturing of a product, the tolerance limits may specify the acceptable range of dimensions, weight, strength, or other characteristics of finished product, which may vary slightly from the target limits. If a product falls within the tolerance limits, it is considered to be acceptable, even if it is not exactly the same
as the target limits. Now we will discuss specification limits. Specification limits are the values between which products or services should operate. These limits are based upon customer requirements, industry standards, or the manufacturer's own goal for quality and performance. They serve as the target for the process and are used as a basis for setting control limits in statistical quality control. Generally, there are two types of specification limits, which are lower specification limit and upper specification limit. If the product falls between the upper specification limit and lower specification limit, then the product meets the customer's requirement. And if a product falls outside the specification limit, it is considered to be defective and may be rejected. In question number 5, we have to differentiate between variance and coefficient of variation. तो वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में कुछ डिफरेंसेस इस प्रकार से हैं. व्यूअर्स, अगर आप किसी प्रॉब्लम या टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स या दिए गए लिंक पर शेयर कर सकते हैं.